नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर सतीश धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंसेज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। ये एक पहला ऐसा स्पेस सेंटर है नॉर्थ इंडिया में जो खुलने जा रहा है, और इससे पहले जो स्पेस सेंटर थे वो सारे का स्पेस सेंटर जो थे वो साउथ इंडिया में थे, लेकिन अभी नॉर्थ इंडिया में, और वो भी जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ये खुलने जा रहा है। और क्या कुछ फ़ायदा रहेगा स्पेस सेंटर से, क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ युवाओं के लिए आएंगी, और किस तरीके से पूरा भारत जो है अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी पकड़ मजबूत करेगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रेस वार्ता रखी गई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा। आइए देखिए क्या कहा उन्होंने प्रेस वार्ता में। Historic day, but I think for North India as such, because what is going to happen today is the first of its kind in entire North India. Most of the space technology over the last 70 years was confined to South India, and mostly to the states of Andhra Pradesh, Kerala, Bangalore. और जब सबसे पहली बार मैं स्पेस डिपार्टमेंट में आया, because the oath ceremony happened on the 26th of May 2014 around 6 o'clock in the evening. Within a few days, Dr. Radhakrishnan had arranged a PSLV launch. So that was my first visit ever to Sriharikota. In college, we used to see a remote corner news about Sriharikota, a rocket being launched. Nobody knew where it was. And the media also didn't give it enough coverage. On a remote page, a remote single column. So I must remind him, I don't know whether he remembers also, he's a good friend also. Around mid of night, he took me there. And he said, I'll take you to the place which is forbidden even for the doctor, for the scientists, because the launch was to happen just a few hours later. So on our way back, I told him, I said, Radha, I have made a principle for myself to learn one new thing every day. What I learned today is, to reach this spot, either you should be as eminent a scientist as Dr. Radhakrishnan, or somehow manage to enter politics and become Minister of Space. But then on a serious note, I said, this is a huge anomaly all of us owe to correct. And then it occurred to my mind that we'll carry space technology across the country. We took a decision to open up 2 institutes, one in Northeast, because that was the area I was also looking after. So we have already set up one in Agartala, Tripura, in the premises of the NIT. And the second one we started from North, the Central University, Jammu. And I must thank the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. He's been very supportive in all the science initiatives, particularly so in space technology. It is he who has been credited for unlocking the space. As I said, the space area was forbidden. Today, we are also involving private players into this. And the result is that the times to come will have space economy, space collaboration, space diplomacy, space conquest. Space economy is already started. Our launching pads are also now putting up satellites from several other countries, generating a revenue of several million euros and several million American dollars. Space collaboration is already started. It is India, at the initiative of Prime Minister Modi, put up a SARC satellite which is catering to Nepal, Bhutan, Bangladesh, and Afghanistan. Of course, Pakistan chose to keep itself away. And so space conquest in the sense, and space, even recently you saw Ukraine, when the signals went off, it sought support from some other countries to access satellite. So we are entering into an era where economy of the world, and since India is going to play a global role, is going to be hugely dependent on science and technology. And as far as India is concerned, we have already taken a lead as far as space technology is concerned. I always say we are in the 75th year of India's independence. Next 25 years are going to be crucial, as Honorable Prime Minister always keeps saying, Amrit, Azadi Ka Amrit Mahotsav. And the ascent of India as a frontline nation of the world has already started, and it has started through the medium of space. So we are already, and just imagine, it's been a miraculous journey. When Satish Dhawan, whose portrait you saw outside, and Sarabhai began, we were singing nursery rhymes, Chanda Mama Dur Ke. Whereas Soviet Union had already sent a person in the space, and a few years later in 1969, Neil Armstrong landed on behalf of America. I always say in lighter vein that he went around
said that, made that famous statement, one small step for man, huge step for mankind. But he couldn't see the presence of water around. That was our Chandrayaan which went and picked up. So we already taken a lead. That's what I want to say. And I have to compliment Dr. Radhakrishnan. He actually, soon after I conceived the idea of having a department over here, I requested him to take over the responsibility as advisors, because I thought we want to build the institution. And the second thing we did was, now that we are going to start a course that makes some news also, of 60 students in B.Tech, in this aeronautic aviation, in the specialized area. And the first thing I said when we conceived this course, that we will have the entrance to IIT JEE exam, whether one likes or not. So that tomorrow neither I send him a slip nor another MLA sends it, nor Ganga ji sends. मैंने इनसे कहा कि आपके लिए भी सहूलत रहेगा, एक मंत्री को खुश किया, दूसरा नाराज़ हो गया, आप कहेंगे साहब मैं क्या करूँ एंट्रेंस, वी वांट टू बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन, नहीं तो कल क्या होगा, यहाँ भी धरना प्रदर्शन हो जाएंगे, मुझे पीछे से लगाओ, मुझे आगे से लगाओ. It will be a foolproof examination through the same exam which selects IIT and NITs. The boys or the girls will be given the option to enter their preference. We have a similar institute in Trivandrum, which is the first of its kind. I think about 160, 150 intake. 100% placement. It's a huge career now. And almost 50-60% go to America, NASA. And secondly, this is also going to be a new avenue for startups, which is unfortunately not picked up in this part of the country, including Jammu. We are still in the Naukri mindset. When you talk of job, that means government ki Naukri. So the youth also are engaged in demanding a government job. The media also takes fancy in capturing pictures of Dharna Pradarsan. पहले साउथ इंडिया जो है टेक्नोलॉजी का हब था, अभी हम ऐसा मान सकते हैं 21st सेंचुरी है और 21st सेंचुरी में आपके कर कमलों से जो है नॉर्थ इंडिया आपके सहयोग से ये संभव होगा. सर वो नॉर्थ इंडिया जो है वो अभी टेक्नोलॉजी हब बनने जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ जो रॉ मटेरियल्स यूज होंगे, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि अब की बार जो है टेक्नोलॉजी सेंटर इसरो में खासकर प्राइवेट को भी लाया जाएगा. हम फ्यूचर में ये देख सकते हैं कि जम्मू के अंदर, खासकर मैं जम्मू की बात करूंगा, जहां जम्मू के साथ जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां पे ये सारी इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है. बिल्कुल, हम इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व करने की चेष्टा कर रहे हैं और स्टार्टअप्स को भी. और आपने ठीक कहा, क्योंकि इसके अधिकतर संस्थान दक्षिण भारत में थे, तो कहीं या तो बच्चे पहुँच नहीं पाते थे या उनको उतनी जागरूकता नहीं रहती थी. यहाँ पर लाने के पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरणा ये भी थी कि जागरूकता भी आए और साथ में उन तक पहुँचे कि क्या क्या यहाँ पर प्रावधान उपलब्ध है. और निश्चय ये जो आप कह रहे हैं उसी दिशा में प्रयास हो. तो में जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि भारत जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, उस तरक्की में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है. इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नॉर्थ इंडिया में जम्मू के अंदर जो है पहला स्पेस सेंटर खोला गया. बहरहाल ये पहले सिर्फ साउथ इंडिया में था और वही इस स्पेस सेंटर खुलने से जहाँ भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी तो मजबूत होगी, वहीं जो युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटी के जो हैं अवसर, एम्प्लॉयमेंट अवसर जो हैं वो जनरेट होंगे. और इंडस्ट्री सेटअप, खासकर जो स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए रॉ मटेरियल यूज़ होता है, उन सारी चीज़ों की इंडस्ट्री जो है वो अभी साउथ से नॉर्थ की तरफ भी शिफ्ट की जाएगी, जिसके चलते यहाँ की इकॉनमी भी काफ़ी बूस्ट होगी. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आज यहाँ पे प्रेस वार्ता की. आपकी क्या राय है स्पेस सेंटर के बारे में, कितना फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए जाने वाले समय के लिए? हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. जुड़ रहेंगे जम वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया. जय हिंद.